Hello guys, welcome to the day 12 of Leetcoding every day until I get a job. So, the problem that we are solving today is valid parenthesis string. So, as a problem statement states that given a string S containing of only three types of characters, a open bracket, a close bracket, and a star, return true if S is valid. The following rules define a valid string. Any left parenthesis must have a corresponding right parenthesis. Any right parenthesis must have a corresponding left parenthesis. Left parenthesis must go before the corresponding right parenthesis. Star could be treated as a single right parenthesis or a single left parenthesis or an empty string. ओके, सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें कह रहा है कि हमें थ्री टाइप के करेक्टर दिए गए हैं, एक ओपन ब्रैकेट, एक क्लोज ब्रैकेट और एक स्टार। हर ओपन ब्रैकेट के लिए हमारे पास राइट साइड में एक क्लोज ब्रैकेट होना चाहिए उस ओपन ब्रैकेट को क्लोज करने के लिए। ऐसे ही हमारे पास हर राइट पैरेंथेसिस के लिए यानी हर क्लोज ब्रैकेट के लिए एक ओपन ब्रैकेट होना चाहिए जो उसके लेफ्ट साइड हो, और लेफ्ट पैरेंथेसिस हमेशा राइट पैरेंथेसिस के पहले आना चाहिए। ओके ग्रेट। स्टार कुड बी ट्रीटेड एज अ सिंगल राइट पैरेंथेसिस और सिंगल लेफ्ट पैरेंथेसिस और एन एम्प्टी स्ट्रिंग। तो स्टार को हम तीन तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, एज अ सिंगल राइट पैरेंथेसिस, अ सिंगल लेफ्ट पैरेंथेसिस और अ एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, तो हम लोग बेसिक टेस्ट केस देख लेते हैं इसके, जो कि हैं इस equal to true in this case. Then we have one case in which we have a star here, and then also we have a true, and then we have this star, and this is also true. Okay, right. So हमारे पास ये तीन टेस्ट केसेस हैं। हम इन्हीं से समझते हैं कि ये वैलिड है कि इनवैलिड है। सो इन द फर्स्ट टेस्ट केस itself हमारे पास एक ओपन ब्रैकेट है, एंड देन फॉर दैट ओपन ब्रैकेट देयर इज अ क्लोज ब्रैकेट फॉर अस, राइट। अब हमारे सेकंड टेस्ट केस में देखते हैं, हम लोग के पास एक ओपन ब्रैकेट है, उसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास राइट साइड में एक क्लोज ब्रैकेट है और यहाँ पे एक स्टार है। इस स्टार को हम इस पर्टिकुलर टेस्ट केस में एक एम्प्टी स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेंगे। अ स्टार कैन बी ट्रीटेड इन थ्री डिफरेंट वेज, अ ओपन, अ क्लोज और एन एम्प्टी स्ट्रिंग, राइट। नाउ इन दिस वन, in the third test case, we have a open bracket. To balance that, we have a close bracket on the right side. Then we have a star, and then we have a close bracket. Now, in this particular case, this star would be treated as a open bracket. तभी हम लोग का ये balance हो पाएगा, because this will cancel out this and this will cancel out this, right? अच्छा, तो अगर मैं इसे नॉर्मली जैसे मैं अपने बाकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूँ, जनरली ब्रैकेट रिलेटेड लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करूँ और ट्राई करूँ क्या मैं बैलेंस कर सकता हूँ ना। लेट्स सी फॉर द सेकंड टेस्ट केस फर्स्ट। इसमें मैं एक लेफ्ट पॉइंटर रखूँगा, राइट पॉइंटर रखूँगा। नाउ लेफ्ट पॉइंटर विल पॉइंट टू अ ओपन ब्रैकेट, एंड एट सेम टाइम मेरा राइट पॉइंटर जो है वो एक क्लोज ब्रैकेट को पॉइंट आउट करेगा। Now left will cancel out right. Now if left is an open bracket and right is a closed bracket, then it will cancel out, right? मैं अपने लेफ्ट और राइट पॉइंटर दोनों को मूव आउट करा दूंगा। Now left comes here, right comes here. Now in this particular case मैं एक स्पेशल केस लिख दूंगा, if left and right are at same position and that particular character is a star, then treat it as a empty string, right? और फर्स्ट टेस्ट केस पे भी इसे चला के देख लेते हैं, does it work on that? So initially in the first test case, there are just only two brackets, so left and right. These both cancel out, and we have a valid string, right? So if I cancel this out, I have to maintain some count, right? तो मैं एक काउंट वेरिएबल बना लूँगा, इसमें मैं काउंट की वैल्यू इनिशियली ज़ीरो रखूँगा। जब मैं लेफ्ट पॉइंटर पे होऊंगा और अगर एक ओपन ब्रैकेट मिला तो काउंट प्लस हो जाएगा, और जब मैं राइट पॉइंटर पे होऊंगा और जब मुझे क्लोज ब्रैकेट मिलेगा तो मैं काउंट माइनस करा दूंगा, राइट। सो इसमें क्या होगा, अगर मेरा जो लेफ्ट है वो ग्रेटर हो जाता राइट से, उस पर्टिकुलर कंडीशन में मुझे लूप रोक देना है। तब अगर मेरा काउंट ज़ीरो है, देन आई हैव अ वैलिड केस, राइट। ओके ग्रेट सो फार। नाउ let's test it out for the third test case. I have this
open bracket, then have a star here, and then have a close bracket and close bracket. So initially my left pointer is here, my right pointer is here. Now left cancel out the right, left move this particular place, and right move here, right? Now this is a star. Now this particular star can be treated in three different ways: a open, a close, and a empty string. तो मेरे पास चॉइस है स्टार के लिए, राइट? अगर मैं इस स्टार की चॉइस के लिए वैल्यू पुट कर दूं क्लोज या ओपन, तो मुझे तीन डिफरेंट टेस्ट केस बनाने पड़ेंगे सिर्फ इस स्टार के लिए, राइट? सो आई हैव टू मेक थ्री डिफरेंट टेस्ट केस, और फिर अगर मैं हर स्टार के लिए तीन डिफरेंट टेस्ट केस बनाऊंगा, एंड द थिंग इज अगर मेरे पास सोचो मल्टीपल स्टार्स, राइट? नाउ in this particular case, if I create a case like this is a fourth case that I have created. I have a left pointer here, a right pointer here. Left cancel out the right one. Good. Left move here, right move here. Now, both of these are star. Now there are three cases for this, and then three cases for this. All the three cases will combine with this. This case will combine with this, and this, and then this will combine with this, and in a similar fashion. So we have nine combination here, or just two stars. I have nine combinations, and then this particular star itself can have three different more combination. Now, what will happen if I have multiple stars? Let's say I have a complete string made up of stars only, right? I can just can't keep forming for loops out of combination, right? So ऐसी सिचुएशन में सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो है रिकर्जन, क्योंकि मेरे पास एक स्टार है, मुझे उसे तीन तरीके से टेस्ट करना है: ओपन ब्रैकेट, अ क्लोज ब्रैकेट, एंड एन एम्प्टी स्ट्रिंग, राइट? तो ये तीनों कंडीशन मैं रिकर्जन से इजीली लिख सकता हूँ। और रही बात मेरी ओपन और क्लोज को मेंटेन करने की, तो मैं उसे भी मेंटेन कर सकता हूँ एक वेरिएबल से, क्योंकि अभी भी मुझे अपने ओपन एंड क्लोज के लिए एक वेरिएबल लेना ही पड़ रहा था। आई वॉज टेकिंग अ काउंट, क्योंकि मैं लेफ्ट और राइट में मुझे कोई काउंट तो मेंटेन करना पड़ेगा ना। आई कॉन्ट जस्ट से दैट लेफ्ट इज अ ओपन ब्रैकेट एंड राइट इज अ क्लोज ब्रैकेट, सो हाउ विल इट जस्ट कैंसिल आउट एंड मूव इट, राइट? ऐसे तो मुझे पता नहीं चलेगा, देयर वुड बी नो ट्रैक ऑफ how many open bracket did I see, if the particular condition satisfy in this case. मेरे पास लेफ्ट जब मेरा राइट से ग्रेटर हो जाए और मेरा काउंट जीरो हो, देन इट इज अ वैलिड केस। अगर काउंट -1 हो गया तो भी वो गलत केस है। सोचो ऐसा केस है कि मेरे पास कई सारे ओपन ब्रैकेट हैं और क्लोज ब्रैकेट मेरे पास कम है, या मेरे पास ओपन ब्रैकेट क्लोज के बाद है, तो ऐसे सिचुएशन में मेरा काउंट निगेटिव जा सकता है। सो टू अवॉइड दैट केस मैं सिर्फ ये चेक करूंगा कि काउंट जीरो। सो दैट इज अ थिंग। इस वजह से मुझे एक काउंट तो मेंटेन करना था, तो मैं उसे ओपन नाम से या काउंट नाम से मेंटेन कर लूंगा, राइट? अब मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें मेरे पास कई सारे कैरेक्टर्स हैं। आई हैव दिस, just say I have this, right? Okay, great. Now I have to check whether this is a true string or a false string, right guys? इनिशियली मैं कहाँ पे खड़ा हूँ? मैं खड़ा हूँ इंडेक्स नंबर 0 पे, राइट? मैं इंडेक्स 0 पे हूँ, ये एक ओपन स्ट्रिंग है, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, सिर्फ ओनली वन चॉइस, दैट आई इंक्रीज ओपन प्लस 1। आई विल गो फर्दर डाउन, जस्ट ओके, आई विल गो फर्दर डाउन। मेरे पास कुछ इस तरीके का केस बनेगा, मेरे पास 1 star, 2 star, and 2 close brackets are there, right? Now, at this particular star, I have three cases. One is I treat this as an open string, one as a close, and one as an empty string, right? Now, if I treat it as an open bracket, then it becomes open plus 1, right? And in this particular case, it will become open minus 1. And here, it will remain the open it was, right? अब फिर इससे जो टेस्ट केस डिराइव होगा, दैट वुड बी अ स्टार, देन टू क्लोज ब्रैकेट, दिस वुड अगेन बी अ स्टार, एंड दिस इज टू
bracket, and this is again the similar test case, right? Now the issue is, यहाँ पे मेरे पास कितने ओपन ब्रैकेट हैं? दो ओपन ब्रैकेट हैं अभी मेरे पास। यहाँ पे मेरे पास कितने ओपन ब्रैकेट हैं? मैंने यहाँ पे से ओपन लिया था और यहाँ पे से क्लोज कर दिया था, राइट? सो मेरे पास ऐसे में जीरो ओपन ब्रैकेट है, यहाँ पे मेरे पास एक ओपन ब्रैकेट है अभी, राइट? नाउ हियर आई हैव टू ओपन ब्रैकेट्स राइट नाउ। I have this particular star right now for me and two open brackets. So सिमिलर टेस्ट केस, थ्री केसेस जाएंगे इसके। ये एक में प्लस करेगा तो थ्री ओपन ब्रैकेट हो जाएंगे मेरे पास। यहाँ पे मैं एक ओपन ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा तो मेरे पास सिंगल ओपन ब्रैकेट बचेगा। एल्स आई विल कीप जस्ट टू, एंड सिमिलर सिनेरियो यहाँ पे बनेगा। आई विल टेक थ्री ऑप्शंस, either take it as 1 or it will become minus 1 or it will remain 0, and in similar way this is 1, so this would become eventually 2, and this would become 0, and this would become remain 1, right? तो इसी तरीके से मेरे ब्रैकेट एक्सपैंड होते जाएंगे ट्री में नीचे की तरफ, और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। सो मेरे पास थ्री चॉइसेस हैं स्टार के लिए। इवेंचुअली मुझे बस ये चेक करना है कि मेरे ओपन ज़ीरो हो जाए। व्हेन आई रीच द फाइनल इंडेक्स, व्हेन आई एम स्टैंडिंग हियर, जब मैं n-1 पे हूँ, तो मेरा ओपन ज़ीरो हो जाना चाहिए। या मैं जब n से आगे चला जाऊँ या n-1 से आगे चला जाऊँ या n ग्रेटर देन इक्वल टू n हो जाए मेरे पास वैल्यू, उस समय मेरे पास ओपन ज़ीरो होने चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने सारे ब्रैकेट टेस्ट कर लिए। एट दिस पर्टिकुलर कंडीशन मेरा ओपन ज़ीरो होना ज़रूरी है। ओके, तो मैं इसका एक रिकर्सिव कोड लिखने के लिए अगर सोचूं तो मैं एक रिकर्सिव कोड लिखूंगा, bool solve what I am passing is my index, that would be int index, and with that I am passing open, that would be my count, right? And do I am passing anything else? No, I am not passing anything else, right? Okay, so मेरे पास तीन केसेस हैं। फर्स्ट केस जिसमें मैं पहले चेक कर लूँगा, इफ़ एस आई इज इक्वल टू open bracket, then we can't do anything. We'll just be like calling the next recursive function. I can take a variable that is flag, and in flag I will just call the solve forward index plus 1, and then open plus 1. No, sorry, this would be a open bracket. So just a second, guys. Let me erase it, and we have an open bracket. Okay, great. Now, apart from that, I have another case, that is as if si is equal to a close bracket. In that case, flag would be solve index plus 1, comma, open minus 1, because it is a close bracket and we will cancel out. Else, it is a star. Now, there will be three different conditions. One would be I will take initially flag as false here, and then I will call three different condition. One would be flag as uh, for the solve index plus 1 and open plus 1. Another would be solve index plus 1 open minus 1, and then another would be flag solve index plus 1 and let the open remain same, right guys? मैं इसे इस तरीके से लिख लूँगा। ओके, सो मेरे पास एक फ्लैग है जिसमें मैं वैल्यू चेक करा लूँगा, स्टोर करा लूँगा। ओके, इसमें अभी हम थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन और कर सकते हैं इफ़ यू वांट इट, क्योंकि जैसे मैंने ये पॉइंट पे बात करी कि इफ़ एस आई इज़ अ क्लोज ब्रैकेट, राइट गाइस, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अगर मेरे पास ओपन जब मेरे पास ग्रेटर देन 1 हो तभी ये कंडीशन चेक करने वाली है। सोचिए मेरे पास ओपन नहीं है और मैंने ये ब्रैकेट घटा दिया, देन आई हैव अ नेगेटिव ओपन नेगेटिव क्लोज, राइट? और उस केस में मेरा आंसर फॉल्स आना चाहिए, राइट? और अगर मैं फ्यूचर में जाकर उसे प्लस 1 करके बढ़ा दूंगा, देन इट वुड बी लीडिंग टू अ फॉल्स केस, वो फॉल्स ट्रू हो जाएगा। यानी इस तरीके से देखते हैं। अभी सोचते हैं मेरे पास ये एक क्लोज ब्रैकेट था, एक क्लोज ब्रैकेट था, और मेरे पास ओपन यहाँ पे है। मैंने इनिशियली -1 कर दिया, फिर -1 कर दिया, फिर +1, फिर +1, कैंसिल आउट तो हो गए, लेकिन क्या ये ट्रू केस है? नहीं, ये फॉल्स केस है।
सो यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा चेक रखना पड़ेगा, दैट आई वॉज मिसिंग आउट। सो मैं एक एक्स्ट्रा चेक रखूँगा कि मेरे पास जो ओपन करेंटली हैं वो ग्रेटर देन 1 होने चाहिए, तभी मैं ये केस एग्जीक्यूट करूँगा। या मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, आई एग्जीक्यूट दिस केस पर्टिकुलरली एट फर्स्ट। जो मुझे ये चेक करना है, अगर करंट वैल्यू एक स्टार है तो मेरे पास 3 ऑप्शन है, मैं उन्हें चेक करके आऊँ और उसके बाद मैं अपना ओपन और क्लोज चेक कर लूँ, राइट। ये भी एक तरीका है। Okay, so this is the recursive solution that I am thinking, and yes, this will work. Let's try to code this। जो मैंने अभी सोचा है उसी के हिसाब से इसे कोड करेंगे। Let's create a function, I will call it tool solve। I have an int index in that and int open। What I need to pass is the string s also, right? And I will also pass one more thing, that would be the length, right guys? Now, अच्छा, बेस केस तो हम लोगों ने बात ही नहीं करी। बेस केस के लिए तो मैंने बात ही नहीं करी। बेस केस क्या होगा? बेस केस, इफ इंडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू n एंड ओपन इज इक्वल टू 0, देन इट इज़ अ ट्रू केस, राइट। अगर इंडेक्स जो है वह एरे के भाई स्ट्रिंग के बाहर चली गई है, यानी अब पूरी स्ट्रिंग एग्जॉस्ट हो चुकी है, और उस समय मेरे पास अगर ओपन 0 है, करेक्ट 0, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव नहीं, करेक्ट 0 है अगर, तभी वो वैलिड केस होगा। तो खैर, ये तो हम लोगों ने टेस्ट केस अपने पहले ही बात कर ली थी, लेकिन फॉर जस्ट सेक ऑफ इट टॉक्ड अबाउट इट। सो इंडेक्स बना लिया मैंने, इंडेक्स इज इक्वल टू, और इंडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, then do one thing, return open is equal to 0। In that particular case we will return a 1, right guys? अब क्या करना है? अब एक फ्लैग बनाना है, bool flag। इनिशियली फ्लैग फॉल्स होगा। नाउ फॉर द फर्स्ट केस, ओके, if s bracket index is equal to a star, then in that particular scenario, okay, मैं थोड़ी इशू कर सकता हूँ, यस, हाँ, अब if करेंटली मेरे पास जो ओपन है वो ग्रेटर देन 0 है, then do this thing, that is flag or equal to, call the solve again, call the index plus 1 comma, and we will treat this as open minus 1, and we have the string s and we have the n length, right? Now there's another case, that is if, not if, we will just use a flag here because बाकी दोनों कंडीशन तो हमें चेक करनी ही करनी है। ये कंडीशन स्पेशल कंडीशन होती है, स्पेशल check condition to avoid the case like we have the bracket, we have the bracket first and then we have the close bracket, right? So condition ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। This is like this, right? Yeah, like this। Okay, now solve index plus 1 comma open plus 1 comma s comma n, right is one more flag, that is for will solve it, have index plus 1 comma open, let the open be open, don't change it, just let it be what it was। Okay, now it is good। Now the other case is if I have s index equal to what, uh, a open bracket। Now when it is an open bracket, then we have nothing to worry about. We have a flag would be odd with solve index plus 1, we have open plus 1, and we have string, then we have n, right guys?
Okay, now final case, that is else if this index is equal to a close bracket. In this particular scenario, I have to check one more thing, and I will do this: open greater than 0. Same thing, special condition to avoid this particular case. Now I will do what? Flag, this is solve, go index plus 1, and then go open -1 comma s comma n, right guys? Okay, now what I need to do is return my flag, right? Now the flag would eventually be true or false. These two can be the only case that my flag can hold. Okay, मैं यहाँ पे int n निकाल लूँगा जो कि मेरा start size होगा. Then I will just call the function, that is solve. I have index 0, and I will pass the count, that is also 0, and then I have the string, then I use the n, right? Now this should work according to me. Let's just try. Okay, let's try to submit this. Okay, we got the TLE. TLE, what is the length? We have string length of 0. तो इसको बेसिकली एक डीपी में कन्वर्ट कर लेते हैं, और दिस पर्टिकुलर केस let's convert it to a dp. Good. We have a string length, we have a string length 100, right? तो मैं अपनी डीपी बना लूँगा. मैं अपनी डीपी कितने साइज की बनाऊँ? इन डीपी 101 and we have 101. Let's see. Okay. अब ऐसा क्यों है, इसका भी रीज़न लिख देते हैं. db 1. Okay, where's the comment? We have dp index and open. Now the maximum open can be the number of the open, can be the length of the string, right guys? That is why the size is 101. Okay, भाई dp है तो basic condition लगा देते हैं. If dp index and open is not equal to -1, then do one thing, that is dp index open return, right? Now do one more thing, that is dp index and this is open is equal to flag, right? Do I need to make one more change? Yeah, I need to set the size of my dp again. So that is also a thing that I need to do, that is I will use mem set, and what I have is dp, and I will set it with -1, and what will be size of dp, right? Now dp is globally declared, so it should work. It works or not, just comment कर देते हैं थोड़ा. Resizing the dp part. Okay, right, let's try to submit this one. Okay, right, it got submitted. But now what I want is, I want to write a tabulation code for this.
इसी डीपी कोड से मैं टैबुलेशन कोड डिराइव करने की वो कोशिश करूँगा. You just first comment this one and just put a star here. This, right? Just remove this part. ओके, तो मैंने ऊपरी पार्ट में वो कर दिया है और अब मुझे बनाना है टैबुलेशन का कोड. राइट गाइस? ओके, तो चलते हैं टैबुलेशन का कोड बनाने के लिए. अभी तक जो मेरी कंडीशन है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास एक स्ट्रिंग है, इसमें मेरे पास ओपन है और इंडेक्स है. इनिशियली मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट इंडेक्स से और ज़ीरोथ इंडेक्स से अगली इंडेक्स पे जाता हूँ, उससे पूछता हूँ कि तुम्हारे हालचाल क्या है, तुमने क्या कर रखा है, तुम्हारे पास कितने ओपन है कितने क्लोज है, कि तुम्हारे ओपन और क्लोज मेरे ओपन और क्लोज को बराबर कर सकते हैं. यानी मेरे पास जैसे ओपन वन था, मैंने अपना ओपन वन तुम्हें दे दिया, अब तुम क्या मेरे ओपन वन को ज़ीरो कर सकते हो, या इन फ्यूचर किसी से तुम मेरे ओपन वन को ज़ीरो करवा सकते हो. दैट वॉज वॉट आई वॉज डूइंग इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. राइट? तो टैबुलेशन लिखने के लिए मैं अपने मेमोराइजेशन के कोड का इस्तेमाल करूँगा. मैं हर बार इंडेक्स से +1 जा रहा हूँ और मैं ओपन है मेरे पास. नाउ these two would be my table, these two will be the two length and column for my table. Now the particular case is कि मैं इन्हीं दोनों पे लूप करूँगा for index 0 to index less than n and for open is equal to 0 and open is less than n. Right? Now अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसे केस लिखने की कोशिश करूँगा. तो मेरा जो डीपी का केस है पर्टिकुलर इंडेक्स पे और जो मेरा ओपन है पर्टिकुलर इंडेक्स पे, वो इक्वल क्या होता है, मैं आगे कॉल करता हूँ ना. तो मुझे डीपी इंडेक्स +1 और वट एवर द ओपन दैट आई हैव, मैं ओपन की वैल्यू चेंज करूँगा ना. मेरे पास जो करंट ओपन है ना, वो ओपन में +1 या -1 जो भी होगा मैं आगे भेजूँगा. कि अगर भाई करंट करंट ब्रैकेट मान लो एक ओपन ब्रैकेट है, तो मुझे फ्यूचर में ओपन +1 के साथ भेजना पड़ेगा ना, तभी तो वो सॉल्व करेगा ओपन +1 को. राइट? ऐसे अगर यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट होगा तो ओपन -1 के साथ भेजना पड़ेगा. राइट? स्टार होगा तो 3 कंडीशंस जाएंगी. बट द इशू इज़, अगर मैं स्ट्रेट अप फॉरवर्ड लूप लिख रहा हूँ जिसमें मैं 0 से जा रहा हूँ, तो मेरे पास इस स्टेट का एक्सेस नहीं होगा. मेरे पास स्टेट पे जाने का एक्सेस नहीं होगा बिकॉज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सेस इज इंडेक्स +1. अच्छा, मैं इंडेक्स पे खड़ा हूँ, मुझे इंडेक्स +1 कैसे पता होगा, क्योंकि मैं तो 0 से आ रहा हूँ, मैं तो अपनी डीपी पीछे से बिल्ड कर रहा हूँ ना इस पर्टिकुलर सिनेरियो. या तो भाई मेरे पास, या तो मैं पीछे की तरफ जाऊँ, या तो मैं इंडेक्स -1 पे जाके चेक करूँ भाई तुम्हारे पास क्या था, तुम्हारे पास क्या था. एंड दैट वुड बी अ लिटिल हैक्टिक. मैं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ. मैं हर इंडेक्स में आऊँ और इंडेक्स का जो वो है ब्रैकेट, जो भी ब्रैकेट है, मैं उसका कॉम्बिनेशन पिछले ब्रैकेट के साथ बनाने की कोशिश करूँ. लेकिन पिछले ब्रैकेट को तो अपना पता होगा, क्या वो दोनों कंबाइन हो पाएंगे. सो इसी कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए मैं इसे सोच रहा हूँ कि आई वुड जस्ट डू वॉट, मैं इसे ऐसा करूँगा, पीछे से लूप कर लूँगा. मतलब आई विल बिल्ड माई डी पी फ्रॉम हियर. यानी मुझे पता है ना कि अगर मैं इंडेक्स एन यहाँ पे हूँ, राइट, तो और मेरा ओपन 0 है, इफ इंडेक्स इज इक्वल टू n और ओपन इज इक्वल टू 0, देन इट इज ट्रू. राइट? बाय डिफॉल्ट इट इज ट्रू. और ये मुझे कहाँ से पता चला, ये मुझे पता चला मेरे मेमोराइजेशन के कोड से. मैंने अपनी कंडीशन में पहले ही लिख रखा था कि मेरा इंडेक्स अगर ग्रेटर देन n से ओपन मेरा 0 है एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस, तो केस अपने आप ही ट्रू है. तो मैं बस अपनी डीपी टेबल में ये इनिशलाइज करा दूंगा डीपी एन और 0 वुड बी ट्रू. राइट? ये तो मेमोराइजेशन से ही मिल गया मुझे मेरे, ये तो मैंने अपनी मेमोराइजेशन के कोड से उठाया. अब मुझे क्या करना है, बस लूप करना है फॉर n-1 टू दिस पर्टिकुलर 0 इंडेक्स. ओपन में भाई n-1 से भी लूप कर सकता हूँ और 0 से भी लूप कर सकता हूँ. दैट रियली डजेंट मैटर, क्योंकि मुझे सारे ओपन ट्राई करने हैं, हर काउंट ट्राई करूँगा हर इंडेक्स पे. दैट इज़ द ओनली केस, क्योंकि भाई ये तो बेसिक डीपी है ना, कि
हर इंडेक्स में मुझे ट्राई करना ही पड़ेगा, सारी स्टेट बना के चेक करना पड़ेगा कि अगर इतने ओपन थे इस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे, अगर इतने ओपन थे, तो वो हर चीज़ मुझे ट्राई करनी पड़ेगी। ओके, वो तो बेसिक हो जाएगा। सो आई गेस इट इज़ प्रीटी क्लियर। हम लोग इसी को यहाँ पे सीधे समझने के लिए करते हैं। ओके, ओके, लेट्स सी, कोड से ही समझते हैं। अ, पहले डीबी बना लेते हैं। तो मैं डीबी बना लूँगा कि पहले मैं स्ट्रिंग साइज ले लेता हूँ। मेंटेन इज इक्वल टू एस डॉट साइज, राइट नाउ, एंड db or just create a bool db. What do you say? Let's create a bool db. Vector, vector, vector bool, vector bool. Let's just call it db. What will be the size? It will be n plus 1. Then we have a vector. In that vector we have a bool, and it would again have a size of n comma 1, and initially all the values would be false, right? Now the base case that came from the memoization or the recursion, you can say. What would be? It would be dp n and 0 would be true. Now what I will do is I will go for int I is equal to n minus 1 dot I is greater than equal to 0 dot I minus minus, right? Now again, for int open is equal to 0 dot open is less than uh, or equal to n dot open plus plus, right? Okay, uh, I can just say explained in the video. So series padegi. So if si is equal to a, what they call it, a star, right? Okay, not a x but a star. Then do what? I have not created the flag, right? To create the flag कहाँ बनाऊँ? इस लूप के अंदर कि लूप के बाहर? इसके अंदर बनाना है. So just create a bool flag that is initially false. Now if this is a star, then something that can be done, that is flag, and that is or is equal to dp I plus 1, and we have open plus 1. And what I will do is tell it considering it as a open bracket, right? Now again, what I can do is another thing, that is if uh, open, if at current index open is greater than 1, then do what? That is flag, and do or equal to db I plus 1 but with open minus 1. Okay, so the bracket closed properly? Guess not. Right, now it is. Considering it as a closed bracket. And now finally what I will do is I would say this flag would be or equal to dp I plus 1, let the open remain same what it was, let it be. Okay, now this particular case is done. Now let's deal with the other case where if si is equal to a open bracket. In that particular scenario, flag would be or of dp I plus 1 and to open plus 1, right? And finally else if si
is equal to close bracket and open is greater than 1, then do what? That is flag or equal to db bracket I plus 1 and do one thing, that is open minus 1, right? This much is done. Now what I need to do is I need to come out of this loop and I need to return it, right? So यहाँ पर सब testing हो गई है, testing हो गई है, else if के मैंने सब लिख लिया, db I and we have open is equal to flag, and then what? Return at dp 0 index and 0 just return, right? Let's try to run this. I hope it runs. I hope it run it. It should run. और तीनों केस false आ गए हैं यहाँ तक. I guess, yeah, I guess all the cases are false according to this. मैंने flag को pause कर रखा है. मैंने true करा है 90, right? ऐसा करते हैं, इसे else में wrap कर देते हैं. And it would be, it is wrapped in else, then this particular portion shall be x and this shall come here, right? And this would be eventually if this is a flag, this is else, and let's just say this is tp. कोई ब्रैकेट गलत लगा हुआ है क्या भाई? ये किसका ब्रैकेट है? ये else का ब्रैकेट है, ये if का ब्रैकेट है, ये else if का ब्रैकेट है और ये dp का ब्रैकेट है. अब जरा रन करा के देखते हैं क्या गड़बड़ आ रही है. कोई भी गड़बड़ आ रही है क्या? Just okay, the error continues. हो रही है, ब्रैकेट में कुछ इशू लगता है. क्योंकि सारे केसेस आ रहे हैं false, which should not be the scenario, right? तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा ये करेक्शन कर लेते हैं कोड में. मेरे पास एक else का केस है, मैं उसको ही कर लेता हूँ इसे else में, राइट? ये if का केस हो गया और मेरे पास else का केस हो गया. Now in this if si is equal to open bracket, then do what? That is flag or equal to solve. What solve is, no, not solve. I have tp, that is I plus 1, and then I have open plus 1, that particular scenario. And I have another case, that is else if just let's write it open greater than 1, because और कोई condition check होने के लिए है नहीं यहाँ पे, तो I can write it like that also. db I plus 1 and we have open minus 1. This is particular case, and then what I will do is dp I and that particular open, it should be equal to flag, right guys? Now this should be working according to me. अब ट्राई करके देखते हैं. अभी भी तीनों केस गलत आ रहे हैं मेरे हिसाब से. Where am I making the error? Where am I making the error? Okay, realize the issue. कहाँ हो रही है गड़बड़?
Sometimes it just frustrates the hell out of me. Well, anyway, to avoid this, without wasting the time, let's go with GPT Baba. Right, guys? And we will. What is the issue that is making it return false every time? ओके, तो मैंने एक गलत चेक डाल रखा है क्योंकि यहाँ पे ओपन वन नहीं ओपन ज़ीरो होना चाहिए. And let's see whether it runs or not according to the GPT. और गलती पकड़ में आ गई. यहाँ पे ओपन वन मैं रख रहा था, होना चाहिए था ज़ीरो. So it was a small part of error from my side, but okay, 79 टेस्ट केसेस पास हुए 83 में से. मुझे लगा था सब पास हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ ऐसा. ओके, रॉन्ग आंसर आ गया है. हम्म जू 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 जू. हम्म हम्म लेट्स सी. ई केस आउटपुट फॉल्स आ रहा है जबकि ट्रू आना चाहिए. ओके, मेरे पास मेरा मेमोराइजेशन का कोड रन हुआ था तो उसी के अकॉर्डिंग चेक करते हैं. मैं डी पी एन माइनस वन से चलूँगा. ये तो मेरा आई ग्रेटर देन ज़ीरो है. मैं गया ओपन फ्लैग मैंने फॉल्स करा. स्ट्रिंग चेक करी, फ्लैग को चेक करा. ओके, one more issue here. This should be zero. Was considering it as one here also. So yeah, power error. Try to submit it now. हो गया सबमिट. सो या वो ओपन की वजह से एरर आ रही थी. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैड वन मिनी शेयर ऑफ इशू. टैबुलेशन का कोड और ये दोनों कोड हो गए. इफ यू टॉक अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इट वुड बी ऑर्डर ऑफ n क्रॉस n बिकॉज वी आर यूजिंग n क्रॉस n dp. या और हम लोग का जो ओरिजिनल रिकर्जन वाला सॉल्यूशन था उसकी पावर थी ऑर्डर ऑफ 3 टू पावर n. राइट, क्योंकि तीन चॉइसेस थी हर n एन एलिमेंट्स के लिए जो हम लोग के पास स्ट्रिंग में. तो ऑर्डर ऑफ 3 टू पावर n. और सो दिस वाज all for this video. I will see you in the next one.